Please read. The Supreme Court Collegium. Supreme Court Collegium. क्या है Supreme Court Collegium? The Collegium of the Supreme Court consists of 5 senior-most judges, including the Chief Justice of India. Including the Chief Justice of India. Purpose to consider the elevation of Chief Justice or Judge of High Court to Supreme Court, elevation of judges of High Courts as Chief Justice, etc. क्या है? तो कितने जजेस रहते कॉलेजियम में? 5 judges. 5 सीनियर मोस्ट जजेस रहते. ठीक है. नेक्स्ट, क्या काम है इन लोगों का? काम क्या है इन लोगों का? हेलो, क्या काम है इन लोगों का? पढ़े ना अभी. 5 judges रहते. हाँ, क्या काम क्या है? Elevation करना. To consider the elevation of Chief Justice and judges or Justice of High Court. जजेस ऑफ हाई कोर्ट. उसके बाद पढ़िए. The collegium system is nowhere mentioned in the Indian Constitution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम सिस्टम किधर भी मेंशन नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, मेंशन है बोल रहा ना सर. नोवेयर. क्या लिखे हुआ है? नोवेयर. नोवेयर का मतलब क्या? किधर भी नहीं. Okay. Currently, the Supreme Court has 34 judges, including the CJI, from 8 judges, including the CJI in 1950. तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंटली कितने जजेस है? 34 जजेस है, इंक्लूडिंग द सीजीआई. फ्रॉम 8 जजेस इंक्लूडिंग द सीजीआई in 1950. नेक्स्ट, In the third judge case, 1998, the court appointed that the consultation process to be adopted by the Chief Justice of India requires consultation of plurality judge. तो प्लूरलिटी ऑफ जजेस माने जजेस को अगर आप कर रहे थर्ड जज केस में डिसाइड कर रहे थे कि खाली सीजीआई नहीं और उसके साथ 4 जज भी रहना. प्लूरलिटी माने एक से ज्यादा जजेस. नेक्स्ट, He should consult a collegium of 4 senior-most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges give a adverse opinion, he should not send the recommendation to the government. तो इसमें क्या है? Four senior-most judges रहना Supreme Court में. 4 सीनियर मोस्ट जजेस और 2 जजेस गिवन एडवर्स ओपिनियन माने रिकमेंड नहीं करना बोले तो नहीं करना. अगर 2 जजेस भी बोले, 5 में से 2 जजेस भी बोले, माइनॉरिटी जजेस भी बोले कि भाई आप रिकमेंड नहीं करना बोले तो नहीं करना. समझ गए? नेक्स्ट, A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the President. ओके. President का order से ही Supreme Court के जज को remove कर सकते. The grounds for removal are to proved misbehavior or incapacity. तो अगर जजेस को निकालना है तो जो ग्राउंड्स है उसके क्या क्या ग्राउंड्स है? Misbehavior or incapacity. मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. ठीक है. 16 पर The election shall be held in
accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot. तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं. Yes. ठीक है, नेक्स्ट. As per Article 54 of the Constitution of India, the President is elected by the member of the Electoral College, consists of elected member of both houses of the pa- कहाँ गया question? Elected member of the both houses of Parliament, elected member of the legislative assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and the UT of Puducherry. और जम्मू एंड कश्मीर भी. Okay. नेक्स्ट. Not eligible for election. The nominated member of either Rajya Sabha and Lok Sabha or Legislative Assembly of the state. Member of Legislative Council. तो लगा एलिजिबल नहीं है. नेक्स्ट. Srimati Draupadi Murmu, elected as a 15th President of the Independent India. Neelam Sanjeev Reddy was the only one who elected unopposedly as a president. तो क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कौन से प्रेसिडेंट है? 15th President. और कौन सा प्रेसिडेंट जो विदाउट अपोजिशन इलेक्ट हुए? Neelam Sanjeeva Reddy. नीलम संजीवा रेड्डी. गवर्नर के बारे में पढ़ना है आपको. गवर्नर का क्या क्या पावर्स है? He can appoint the chief minister and other minister in the state. The chief minister shall be appointed by the governor, and the other minister shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister. And the minister shall hold office during the pleasure of the governor. ओके, नेक्स्ट. In case of recommendation for the imposition of the president rule in the state, he enjoy constitutional discretion. माने अगर आप इसकी मर्जी रहती, इन केस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इम्पोजिशन प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, ये एंजॉय माने रिकमेंड करे तो कर सकता है, तो नहीं कर सकता. ठीक है, मर्जी रहती गवर्नर की. नेक्स्ट. The governor shall from time to time summon the house or each house of the legislature of the state to meet at such time and place as he think fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. माने 2 सेशन के बीच में 6 महीने ज्यादा नहीं होना. ठीक है. प्रेसिडेंट को वैसे चाहिए सर. यस. The pleasure doctrine is existing only in constitutional sense and is exercised by the governor upon the aid and advice of council of ministers. तो क्या है? Pleasure doctrine. प्लेजर डॉक्ट्रिन है. गवर्नर अपॉइंट एज ऑर्डर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. माने गवर्नर माने सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं. प्रेसिडेंट माने गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं. ठीक है. प्रेसिडेंट माने पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नर माने सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट. Lokpal and Lok Ayuktas are the first institution of their kind in independent India, established under the Lokpal and Lok Ayukta Act 2013. ये पढ़ लिया अपन, जल्दी पढ़ लेते सर. Yes, sir. The bodies aim to inquire and investigate into allegation of corruption against public functionaries who fall within the scope and the ambit of the Act. ओके. This Act provided for the establishment of a body of Lokpal
for union and Lok Ayukta for state. Both Lokpal and Lok Ayukta are statutory body. वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, उन्हें कानून से लाए। नेक्स्ट, The Lokpal of India is committed to address concern and aspiration of the citizen of India for clean governance. फॉर क्लीन गवर्नेंस के लिए इन लोगों का एस्टेब्लिश करे। के बाद It shall make all efforts within its jurisdiction to serve the public interest and shall endeavor to use the power vested in it, eradicate corruption in public life. तो उन्हें लोकपाल को क्या है, अपना कंप्लीट कंप्लीट पावर इस्तेमाल करना है। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए? करप्शन निकालने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए। ठीक है, जी, क्लियर है पॉइंट? yes sir. Recently, Telangana government appoints a state's Lok Ayukta, C.V. Ramulu, and Upa Lok Ayukta as Niranjan Rao. तो तेलंगाना गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करी? C.V. Ramulu को लोक आयुक्त, लोक आयुक्ता कैसा अपॉइंट कर ली। ठीक है, ये उपा लोक आयुक्ता अलग है या नेम है सर? डिप्यूटी लोक आयुक्ता, ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्टेट लोक आयुक्ता सीवी रामुलु एंड उपा लोक आयुक्ता, उप लोक आयुक्ता माने डेप्यूटी उपा लोक आयुक्ता एज निरंजन राव। डेप्यूटी को बोलते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है जी, वैसे वाइस लोकायुक्ता, उसका डेप्यूटी, लोकायुक्त का डेप्यूटी। ठीक है, लायुक्ता कौन है, लोकायुक्ता कौन है? सीवी रामुलु। और उसके हाथ के नीचे कौन रहते? निरंजन राव। निरंजन राव। उसके बाद Presently, Shri Justice Pradeep Kumar Mohanty has been authorized to act as the chairperson Lokpal. तो कौन है प्रेजेंटली लोकपाल, कौन है? P.K. Mohanty. ठीक है, मोहंती। ठीक है, नेक्स्ट, Ministers in Telangana. मिनिस्टर्स इन तेलंगाना, कौन कौन है मिनिस्टर्स तेलंगाना के? Shri M.D. Mahmood Ali is the Ministry of Home, Prison and Fire Services. तो महमूद साहब कौन है मिनिस्टर है? होम मिनिस्टर है, प्रिजन एंड फायर सर्विस की मिनिस्ट्री भी है उनके पास। ओके, और श्री के.टी. रामा राव इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। ओके, और श्री एर्राबेल्ली दयाकर राव is the Minister of Panchayat Raj and Rural Development मिनिस्ट्री ऑफ and पंचायती राज RWS. एंड रूरल डेवलपमेंट, दयाकर राव, के.टी. रामाराव, मोहम्मद महमूद अली। के बाद RWS मतलब सर वीकर सेक्शन क्या? नो, टेल देख के बता दूँ। अच्छा, ओके। श्री तन्नीरू हरीश राव is the Minister of Finance, Health, Medical and Family Welfare. तो हरीश राव क्या है? फाइनेंस, हेल्थ एंड Finance मेडिकल एंड Minister फैमिली and वेलफेयर। Welfare. Smith Patlola Subhita Indra Reddy is the Minister of Education. श्रीमती Sri, श्रीमती पटोला सवित्रा इंदिरा रेड्डी इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। yes, Indra Reddy. ठीक है, के बाद क्या है? Okay. National Register of Citizen. RWS माने रूरल वाटर सप्लाई। अच्छा, RWS मीन्स
Rural water. Rural water supply. Next. National Register of Citizens, 1951, is a register prepared after the conduct of the census of 1951. NRC, National Register of Citizens. Yes. कब बनाते? After the conduct of census of 1951 के बाद बनाए थे. Next. 3. National Register of Citizens, NRC, updation basically means the process of enlisting the name of those persons or their descendant whose name appear in any of the electoral roll up to 1971, 1951 NRC or any of the admissible document stipulated. माने NRC क्या है? Updation means process of enlisting of the names of those persons, those whose names appear in any of the electorals. तो 1951 से 1951 या 1971 में भी इंडिया में थे, उन लोगों का अभी भी है बोल के उसको अपडेट करने के वास्ते. ठीक है. नेक्स्ट. NRC was prepared in 1951 after the conduct of census of that particular year. Okay. The register included particular of all the persons enumerated during that census. Okay. As per status governing Statutes. As per that statutes. As per statutes governing NRC updation, that are the Citizenship Act 1955 and the Citizenship Registration of Citizens and Issue of National Identity Card Rule 2003. क्या है? As per the statute माने law governing NRC updation that the Citizenship 1955 एक्ट को अमेंड करे थे और उसके रूल्स को भी अमेंड करे. 2003 में ये एनआरसी कॉन्सेप्ट लाए. ठीक है. एक आइडेंटिटी कार्ड भी देंगे इन लोगों को. ठीक है. सो इधर से आया अपना आधार कार्ड का आइडिया आया था. अच्छा. ठीक है. नेक्स्ट. Eligible persons for inclusion. Persons who came to Assam from Bangladesh between 1st January 1966 and 25th March 1971 and registered themselves with the Foreigner Regional Registration Office FRRO and declared by the Foreigner Tribunal as Indian citizens. लोगों को रजिस्टर में इंक्लूड करते. ठीक है. नेक्स्ट. All Indian citizens, including their children and descendants who have moved to Assam post 24th March 1971, would be eligible for inclusion in the updated NRC on adducing satisfactory proof of residence in any part of the country outside Assam as on 24th March 1971. तो कोई भी असम के लोग हैं और या कोई दूसरे उसमें चले गए, दूसरे कौन से भी स्टेट में रहने दो, अगर उसका प्रूफ दिखाए तो एनआरसी में उस लोगों को इंक्लूड कर लेते. नेक्स्ट. Persons who can provide any of the admissible document issued up to 24th March midnight 1971. उन लोगों को इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. The provision of the Assam Accord were. असम अकॉर्ड्स माने एग्रीमेंट हुआ था असम के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट. Any foreigner will be given full citizenship, including the right to vote, if he or she had come to Assam between 1951 and 1961. तो 10 सालों में अगर कोई असम को आ गए तो उन लोग क्या है, फुल सिटीजनशिप दे देंगे. नेक्स्ट. The foreigner who had migrated to Assam between 1961 and 1971 will be given all the rights of citizenship,
except the right to vote, which would be denied for a period of 10 years, and those who entered Assam after the year 1971 would be deported. तो 51 से 61 में जो आए उन लोगों को फुल सिटीजनशिप, वोट डालने का भी राइट। जो 61 से 71 में आए उन लोगों को सब देंगे, लेकिन वोट डालने का हक नहीं देंगे। कब तक? 10 साल तक। उसके बाद में उन लोगों को वोट डालने का हक भी मिल जाता। अगर लेकिन जो 1971 के बाद आए उन लोगों को वापस भेजा दीजिए। ठीक है, जैसा आया वैसा वापस। ठीक है। नेक्स्ट, असम अकॉर्ड के बारे में। ये यू आर रीडिंग अबाउट असम Accord. अकॉर्ड्स। नेक्स्ट, On the recommendation of Law Commission of India in its 114th report, Gram Nyayalayas were established. माने गांव, Like ग्राम that. न्यायालय माने गांव Nyala. में, गांव में कोटा, गांव के कोर्ट। The Gram Nyayalayas bill was passed by the Parliament on 22nd December 2008, and the Gram Nyayalayas Act came into force in 2009. तो came क्या into है force सर ग्राम न्यायालय? माने, देखो ग्राम, ग्राम माने विलेज। विलेज, गांव में। देखो गांव का आदमी हैदराबाद आके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आना बहुत मुश्किल है उन लोगों। तो हाँ, अगर अगर उधर का उधर ही सुलह हो गई तो उन लोगों को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। यस। तो गांव में से कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम न्यायालय बनाए। गांव का, गांव की बात गांव में रखना बोलते। वो एक जुडिशियरी है। तो एक तरीके का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। न्याय से जुडिशरी नहीं बोल न्याय सकता, बना शायद सर। न्याय न्याय जुडिशरी, अन्याय न्याय। जुडिशरी नहीं होती वो। एक तरीके का अरेंजमेंट है। अगर आप उधर से सेटिस्फाइड है। पंचायत बोल सकते सर। जी, पंचायत अलग है। पंचायत इज अ लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट है। पंचायत माने पार्लियामेंट, उधर का गांव के पार्लियामेंट। लेकिन जुडिशरी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, न्यायालय माने जहां न्याय होता गांव में, उसको बोलते हैं दरबार बोल न्यायालय। सकते, दरबार। इंसाफ आप बोल सकते। नो, इंसाफ दरबार, में। दरबार नहीं होता। नेक्स्ट, इंसाफ। The act extend to the whole of India except to the state of Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, and to the tribal area mentioned in sixth schedule within the state of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram, respectively. तो क्या है, पूरे इंडिया में ग्राम न्यायालय एप्लीकेबल है, लेकिन एक्सेप्ट नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल एरियाज में, और 6 शेड्यूल एरियाज के स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। Yes, AMTM. तो क्या क्या है, पढ़िए इसके फीचर्स। Some of salient feature of the Gram Nyayalayas Act. सेलिएंट, Salient feature. These are aimed to providing inexpensive justice to people in rural areas at their doorsteps. माने अफोर्डेबल जस्टिस। These are to be established for every panchayat at intermediate level or a group of contiguous panchayat at intermediate level or for a group of contiguous gram panchayat. तो माने 3 लेवल आ रहते ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 2 पे ये ग्राम न्यायालय काम करते। ठीक है, Level 2 में. यस, इंटरमीडिएट लेवल में। Okay. The seat of the Gram Nyayalayas shall be located at the headquarters of the intermediate panchayat. हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत। नेक्स्ट, The Nya Adhikari shall periodically visit villages and may hear the parties and dispose of the cases at the place other than its headquarters. तो न्याय अधिकारी क्या है, टाइम टू टाइम विलेज में जाते रहना
और लोगों की सुनते रहना और अपने हेडक्वार्टर्स पे आके डिसीजन सुना दो। ठीक है, नेक्स्ट। न्यायालय के हेड को न्याय अधिकारी बोलते। यस। The Gram Nyayalayas will try criminal cases, civil suits, claims, or disputes which are specified in the first schedule and second schedule to the Act. They are to follow summary procedure in criminal trial. एक तरीका है जो समरी प्रोसीजर बोल के तरीका है, वो फॉलो करना। ठीक है, समरी प्रोसीजर माने जल्दी जल्दी काम निकालना है, जल्दी जल्दी केस खत्म करने का। नेक्स्ट। Okay. They shall not be bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act 1872, but shall be guided by the principles of natural justice, subject to any rule made by the High Court. तो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, और जो भी क्या है, अगर हाई कोर्ट कुछ रूल बनाए तो वो भी फॉलो करते। ठीक है, तो दे आर नॉट बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट। Anti-defection law. Schedule. It was included under the 10th schedule of the Constitution by 52nd Constitutional Amendment Act 1985. ओके। It was included for the purpose of the disqualification of the members of parliament and the state legislature on the ground of defection from one political party to another. ओके, ये पढ़ लिया अपन, The एक्सप्लेन नहीं 91st, कर रहा हूँ ज्यादा। yes sir, yes sir. The 91st Amendment Act of 2003 omitted an exception provision, that is disqualification on ground of defection, not to apply in case of split. इन केस ऑफ स्प्लिट। Independent member, an हमने independent member of House, हमने क्या है, कोई पार्टी से लड़ते या कोई इंडिपेंडेंट खड़े होता। yes sir, an independent member of a house is disqualified to remain a member of the house if he join any political party after such election. आफ्टर सच इलेक्शन में अगर इंडिपेंडेंट खड़े तो इंडिपेंडेंट ही रहना, जीते बाद में पार्टी में नहीं घुस जाना। क्या ठीक है, क्या? अगर इंडिपेंडेंट खड़े आप, तो लोग पार्टियों से तंग आके इंडिपेंडेंट को जिताते। हाँ। अब जीते बाद में डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, पार्टी में चले आते। अच्छा, तो वैसे नहीं जाना। वैसा गए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। Nominated members. A nominated member of House becomes disqualified for being a member of the House if he join any political party after the expiry of 6 months from the date on which he take his seat in the House. तो क्या है, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स है, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स है, जी अगर उन लोग नॉमिनेट हुए बाद में 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे, जी तो उन लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते। 6 महीने के अंदर अगर उन लोग कोई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में जाना है तो 6 महीने के जैसे अंदर चले आना, नहीं है तो दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट। if a member goes out of his party as a result of a merger of the party with another party. ओके, उसके बाद A merger takes place when two-thirds of the members of the party have agreed to such merger. No disqualification under anti-defection law. तो फॉर एग्जांपल एक पार्टी में 10 मेंबर हैं। ठीक है, जी तो 2/3 मेंबर चले गए, समझो तोड़ के 3 1 जा 3 3 जा 3 3 3 जा 9 3.6 समझो, तो 8, Four members. अगर 8 मेंबर्स 2 4 जा 8, अगर 7
अगर 8 मेंबरान छोड़ के चले गए हम्म, तो ये 8 मेंबरों को डिस्क्वालीफाई नहीं करते, ठीक है। हाँ जी। 2/3 मेंबर्स अगर चले गए तो उन लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मारते, उसको मानते मर्जर, ठीक है। नेक्स्ट जी। पढ़िए। Country currency: Argentina peso, Russia ruble, Iran rial, Norway krone, Korea won. तो क्या है, कंट्री का क्या है, करेंसी है। Currency name अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, peso, पीसो। रशिया की करेंसी क्या है, ruble, ईरान की करेंसी क्या है, rial, नॉर्वे की करेंसी, krone, कोरिया की करेंसी, won. वॉन। नेक्स्ट सर रियल और रियाल बोथ आर सेम ना? यस। Open Network for Digital Commerce (ONDC). It is an initiative of the Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce, Government of India. So we have completed till 22nd. To We will continue from 24th tomorrow inshallah, ठीक है।